Shiga, there's no audio into this. The video is playing, but there is no audio. I think I have to share the sound as well, probably. Good afternoon, friends. A very warm welcome to our Business Opportunity Over Chai. And this special edition Business Opportunity Over Chai will help you to understand the greatest business opportunities that we Franchise India specially brings to you. Business Opportunity Over Chai presented by management team of Franchise India, Mr. Gaurav Malia, Chairman at Franchise India Group, and Ms. Sonia Chaudhary, MD at Franchise India Brands Limited. Every day, 12 p.m., we launch a new brand to explore new business opportunity. Today, we have invited a great brand, WTF, India's fastest growing gym brand. WTF is a unique combination of cutting edge technology, experts trainer, and comprehensive approach to a health and wellness that has made WTF a pioneer fitness brand in India. They believe in bringing an affordable and premium experience that our members can book instantly. To know more about this business opportunity in detail, we have invited the co-founder of WTF Gym, Mr. Vishal Nigam. Over to you, Vishal. Hi, everyone. Good morning, and thank you very much for joining this call. My name is Vishal Nigam, and I'm the co-founder and CEO of WTF. Now, before I talk about WTF, मैं थोड़ा सा अपना background दे देता हूँ. So, I am an artificial intelligence engineer. मैं back in 2016 or 2019 US में था, वहाँ पे काफी काम करा था मैंने. एंड मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. हम सबके घर में आज के डेट में एलेक्सा होती है, राइट, या बहुतों के पास होती है. एलेक्सा को हिंदी सिखाने में काफी योगदान था मेरा बैक इन द यूएस डेज. सो दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल अबाउट. 2019 में मैं वापस इंडिया आया और इंडिया के आई रियलाइज कि इंडिया की फिटनेस मार्केट इज वेरी बिग. ये 2 लाख करोड़ की मार्केट है आज की डेट में. एंड इतनी बड़ी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जिम्स कितनी ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बहुत सारे जिम या मेजॉरिटी ऑफ द जिम ब्रांड वो जिम में एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे. इसकी वजह से बहुत सारे जिम्स ओपन तो हो रहे थे, बट दे वर शटिंग डाउन. एंड आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी कि ये अपॉर्चुनिटी सॉर्ट कैसे हो सकती है कि अगर टेक्नोलॉजी को और सर्विसेज को मिला दिया जाए जिम इकोसिस्टम में, देन दिस विल बी सॉर्टेड एंड इट्स अ ह्यूज मार्केट. सो बैक इन 2020 हमने ये विजन लिया कि हम इंडिया की सबसे और ग्लोबली सबसे बड़ी जिम ब्रांड क्रिएट करेंगे इंडिया से. और हमने 2022 में अपना पहला जिम लॉन्च किया और आज की डेट में 60+ जिम WTF के हैं ऑलरेडी. एंड सबसे बड़ी यूएसपी क्या है कि WTF के जिम्स इंडिया के, मार्क माय वर्ड्स, ये इंडिया के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस जिम है. वी आर द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस जिम ब्रांड इन दिस कंट्री राइट नाउ. हमसे ऊपर टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है. वी आर अ प्रॉफिटेबल जिम ब्रांड. हमारी हर एक फ्रेंचाइजी, हर एक सेंटर WTF ऑपरेट, चाहे वो कोको में हो, चाहे वो कोको में हो, चाहे वो कंपनी हो, एवरी सिंगल सेंटर इज प्रॉफिटेबल. एंड थर्ड में सबसे बड़ी यूएसपी है जो मैं मार्केट में बहुत ओपनली बोलता हूं, इसीलिए हम इतनी एग्रेसिवली 1.5 साल में इतनी तेज ग्रो कर गए हैं कि WTF ने रियलाइज किया कि जिम खोलना तो बहुत आसान है. रियल एस्टेट डाला, मशीन चाली, इट्स ओपन. बट एक जिम को प्रॉफिटेबली ऑपरेट करना, इट्स अ वेरी टफ जॉब बिकॉज मोस्ट ऑफ द जिम ओनर्स और इन्वेस्टर्स दे डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज. So we realized कि हम जिम्स को फ्रेंचाइजी ओनर के साथ ऑपरेट करेंगे. We are going to run the show together. We are going to make sure that we run the day-to-day operations for you and then eventually run the job. And that's what WTF is. हमारा vision is very clear कि अगले 5 सालों में 5,000 clubs हमें इंडिया में खोलने हैं. And we're moving very much in that direction. We are a well-funded startup at the moment. So capital-wise, growth-wise, we have great pool of people supporting us. We've got great set of investors, we've got great set of gym owners who are a part of our system. So हम मार्केट में बहुत एग्रेसिवली ग्रो करें. और मैं आपको बहुत 2-3 चीजें बड़ी अच्छी बताता हूँ. WTF ने ये चीज फिगर आउट कर ली है कि हमें सिर्फ जिम ब्रांड लेकर अपने आप को सीमित नहीं करना है, हमें एक इकोसिस्टम बनना था. इकोसिस्टम बनने के लिए WTF ने क्या किया कि हाँ, जिम्स भी हमने ओपन किए. फिर हमें रियलाइज हुआ कि जिम्स में स्टाफिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज. तो हमने WTF की एकेडमी भी ओपन कर दी. एकेडमी की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है कि हमने वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेडरेशन, जिसको IFBB बोलते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस, इससे बड़ी फेडरेशन ग्लोबली कुछ नहीं है. हम इंडिया में इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है अब जो IFBB को इंडिया लेके आया है और अगले 10 साल के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट किया है कि IFBB के साथ कोई और इंडिया में पार्टनरशिप नहीं कर सकता. और जस्ट टू गिव अ हेड्स अप, इंडिया में
IFBB is God for everyone. जो IITs होता है शायद लोगों के लिए इंजीनियरिंग में, वैसे ही IFBB is for what it is for fitness. Then we, after launching our academy, हमने कहा कि academy is again a revenue for our side. We have our gyms. We realize कि gyms में business सबसे ज्यादा supplements का होता है, and we don't want to get any supplements. So WTF ने in-house supplement brand भी launch कर दी. WTF ने eventually अपना खुद का equipment manufacturing भी launch कर. So आपने कहा कि overall what happens with WTF जब आप partner करते हो, आप फुल कंट्रोल में हो, हम फुल कंट्रोल में हैं अपनी ब्रांड को ऑपरेट करने के लिए. दैट इज द रीजन हमारी ब्रांड इस समय इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल और सबसे इंटरेस्टिंग बात मोस्ट अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है. सो अगले आई थिंक 30-40 मिनट में मैं आप सबको एक जर्नी पे लेके जाने वाला हूं जो पे आपको मजा आने वाला है. यू विल से कि विशाल दिस इज द इन्वेस्टमेंट आई वांट टू डू. एंड बिफोर दैट मैं आपको ग्लिम्स दिखाता हूं कि WTF जिम दिखते कैसे. सो अर्चिका, कुड यू प्लीज गो अहेड एंड शेयर दैट वीडियो ऑन द स्क्रीन प्लीज. And let's make sure this में audio हो इस बार. Let's see, let's give it a second. थैंक यू वेरी मच. सो आप सबने देखा कि WTF जिम का ग्लिम्स था कि हमारे सेंटर्स कितने प्रीमियम और एक्सपेंसिव दिखते हैं. दे आर वेरी वेरी वेल मैनेज्ड, वेल ड्रेस्ड, एंड वन ऑफ द यूएसपीज अगेन WTF की है कि हम अपने सेंटर्स को एक अफोर्डेबल प्राइस में, दैट मीन WTF की फ्रेंचाइजी में आपको 3-4-5 करोड़ रुपए स्पेंड नहीं करना पड़ेगा. बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं यू विल बी स्पेंडिंग लेस देन 1 करोड़ एंड यू विल सी किस तरह का जिम हम क्रिएट करते हैं इन द मार्केट. सो नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू वेट एंड लिसन टू मी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, क्योंकि मैं कुछ प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूं जिसमें मैं आपको WTF के बारे में ब्रीफ करने वाला हूं. ओके, सो हैविंग सेड दैट, लेट्स सी how do I do this. Okay, so ये है हमारी बेसिक फ्रेंचाइजी डेक और मैं इसके बारे में तो आपको बताता हूँ. बट बिफोर दैट लेट मी आपको WTF का एजेंडा बताता हूँ. हमने WTF का स्टार्ट क्यों किया? बिकॉज हमें बहुत क्लैरिटी आ गई थी कि इंडिया की इस 2 लाख करोड़ की मार्केट जो कि हर महीने ग्रो हो रही है. मैं आपको एग्जांपल दूं महीने क्यों ग्रो हो रही है. इंडिया में बहुत सारी इक्विपमेंट कंपनीज हैं. अब आप लॉजिकली सोचिए इक्विपमेंट कंपनीज का बिजनेस कैसे चलेगा जब नए जिम्स खुलेंगे. अब नए जिम्स खुलना तो मैंने कहा बहुत आसान है, बट उनको मॉडर्नाइज करके, स्टैंडर्डाइज करके और इंडिया की बेस्ट टेक बिल्ड करके चलाना इज द टफेस्ट पार्ट, एंड दैट इज व्हाई WTF इज द नीड ऑफ द आवर. बट व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? क्योंकि इंडिया की फिटनेस मार्केट, लुक एट द नंबर्स. पैंडेमिक के बाद इंडिया में फिटनेस का ग्रोथ एग्रेसिव हो गया है. 157%, 157% लोगों ने फिटनेस के बारे में अवेयरनेस जाहिर करी है, गूगल पे ट्रेंड सर्च की है. उसकी वजह हुआ क्या है? 90 मिलियन नए इंडियन एस्पायरिंग फिटनेस एंथुसियास्ट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जो एक अच्छा फिटनेस सोल्यूशन चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ जिम, विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. वो चाहते हैं कि यार मुझे अगर फैट लॉस करना हो, और आपको बता दो इंडिया वर्ल्ड का 3rd सबसे ओबीस देश है, मतलब यहाँ पे 3रे नंबर पे हम सबसे मोटा देश कहलाते हैं. तो आप समझिए उस पर्सपेक्टिव से इंडिया को ग्रो करना बहुत आसान है. और लोग इस समय एक्साइटेड हैं, लोग चाहते हैं कि हम अपनी फिटनेस को यू नो फोकस करें. पर फिटनेस क्या है, पैंडेमिक के बाद ना ऑप्शनल नहीं है. सबको ये रियलाइज हो गया है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें सोना अच्छा चाहिए. वो सब कुछ एक होलिस्टिक सोल्यूशन में मिल सकता था कि एक ऐसी ब्रांड क्रिएट करी हो मार्केट में जो मुझे जिम भी दे, जो मुझे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी दे, जो मुझे ट्रैक भी कर सके, जो मेरे खाने के बारे में बता सके, जो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दे सके, जो मुझे गाइड कर सके, एवरीथिंग. And there was nothing like that, and that is why WTF is existing now in the market. So if you look at the brand that we are actually creating, and let's talk about some of the things. WTF, as I said, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जिम और फिटनेस का. So fitness is not just gym. Fitness is more than gym. Fitness is about gym with exercise, having the right tracking, having the right goal, having the right diet, right trainer, experience, focus, discipline, everything combines fitness. How do you track it? How do you make sure that you are part of it? आप उस जिम में जाना पसंद करोगे जहां पे आपको ये सारा सोल्यूशन एक साथ मिल जाए और जहां पे आपकी फिटनेस आपके लिए पर्सनलाइज्ड, एंड दैट इज व्हाट WTF is. It's one of the best
clubs in the country with the most advanced technology that probably exists there. And the same thing, what we want to do, we want to modernize the gym experience. हमें वो local traditional gym ecosystem से बढ़ के modernization लानी है। आप सबके पास आजकल फोन है, फोन में 50 तरह के एप्स है और मोस्टली हमारी लाइफ उन ऐप से ही चलती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो जोमेटो हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इमेजिन करिए कि आप अगर WTF जिम्स में जा रहे हैं और आपको आज 40 ग्राम प्रोटीन खाना है, बट आपको जोमेटो से ऑर्डर करना है। WTF apps are capable of ordering a 40 gram protein right from WTF app to Zomato. That's the level of technology we have built, and as I said, there's nothing as strong than us in the market. Then this is what we do, this is what we are trying to focus, make sure कि यार हमारी इंडिया की जिम इकोसिस्टम जो हर दिन हर महीने ग्रो हो रही है, हर महीने 500-700 नए जिम्स अक्रॉस द कंट्री खुल रहे हैं, वो फोकस करे रेगुलर इंडियन पे, वो उनके गोल पे फोकस करे। और वो सब कुछ ट्रैक कैसे होगा? जब तक कोई चीज ट्रैक नहीं होगी तब तक आप उसे फिक्स नहीं कर सकते। यानी सिंपल एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि यार ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, उनको ट्रैक करो और उसको सही टाइम पे कंज्यूम करो। वो क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन से कोई चीज ट्रैक नहीं करोगे, आप उस पर बेटर नहीं हो सकते। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट fitness is all about. Eating healthy every day, working out every day, tracking every day is what makes you fit, and that is what the world is moving for. ये हमारे कुछ पुराने सेंटर्स है, जिसको आपने देखोगे ऊपर की पिक्चर में एक लोकल सेंटर जिसको हमने WTF जिम में कन्वर्ट किया। आप नीचे देखो वो जिम कैसा दिख रहा है, और आपको एक मैंने वीडियो दिखाई थी, वो एक अलग वीडियो थी जहां पे दूसरा जिम था हमारा। So you can imagine how fast and how efficiently WTF is growing the center. Tech is the most important part. As I said again, मैं टेक्नोलॉजी की बात क्यों बार बार कर रहा हूँ? बिकॉज ट्रेडिशनल जिम्स तो पिछले 100 सालों से चल रहे हैं, बट आज तक कोई ब्रांड नहीं है जिसने उस हर एलिमेंट को ट्रैक कर लिया हो कि यूजर के जिम में एंट्री से लेकर उसके एग्जिट तक हर एक चीज ट्रैक हो रही है। उसने कब चेक इन किया, उसने कब वर्कआउट स्टार्ट किया, उसने कब कितना वेट लॉस किया, उसने ट्रेनर को फीडबैक दिया कि नहीं दिया। जिम्स में जहां तक जो कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या जिम में हर घंटे में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इस लेवल की हॉस्पिटैलिटी, इस लेवल की पर्सनलाइजेशन WTF के जिम्स में बिल्ड करी गई है। तो आप टेक की पार्ट देखोगे, पर्सनलाइज फिटनेस की बात कर रहा हूं, जिम ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहा हूं। हमने जिम के अंदर थेफ्ट, चोरी को रोक दिया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बिकॉज जब तक लोग टेक को बाईपास नहीं कर सकते, हम इंसान को बाईपास कर सकते हैं, बट हम टेक्नोलॉजी को बाईपास नहीं करते। वो टेक्नोलॉजी अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जो खुद से ही सोच के डिसीजन ले सकती हो, देन देयर इज नो चेंज फॉर दैट। इसलिए हम अपने जिम्स को प्रॉफिटेबल कर पाए, बिकॉज जो पैसों का फ्लो है वो कभी भी सिस्टम के बाहर नहीं जा पाता। एंड आपने यहाँ पे एक चीज देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट मेंबर रिटेंशन एल्गोरिथम। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जिम्स में हर महीने लोगों को आना और हर महीने लोगों का जाना, वो जो जाना है वो बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने मेंबर को रिटेन कैसे करूं। रिटेन कैसे करूंगा जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरा मेंबर इस महीने मेरे साथ खुश है कि नहीं, क्या वो सेटिस्फाइड है मेरी सर्विसेज नहीं। मैं उसको रोक नहीं सकता, मैं उसकी सर्विसेज को बेटर नहीं कर सकता। और नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रांड्स के अंदर ये ऑप्शन था ही नहीं। WTF is the only company in this country right now जो ये डिटेक्ट कर सकती है कि 15वें दिन हर महीने के मेरे जिम में अगर 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उनमें से कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनका सेटिस्फैक्शन रेशियो 50% से कम है, उनकी प्रोबेबिलिटी छोड़ने की ज्यादा है ना। अगले 15 दिन हम उन पे फोकस ज्यादा करते हैं बाय इंश्योरिंग कि उनकी फिटनेस पे ज्यादा पर्सनलाइजेशन किया जाए, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि जब रेवेन्यू का, जब रिटेंशन का या रिन्यूअल का टाइम आए तो वो लोग रिन्यू कर सके। समझो, अगर हमने लोगों को रोकना सीख लिया है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं। क्योंकि हर महीने अगर मैं 100 लोगों में से 90 लोग रोक पा रहा हूं और मैं अगले 50 ला रहा हूं, तो मेरा जिम हर महीने मंथ ऑन मंथ ग्रो कर सकता है। एंड अगेन सिंह, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जनरेटिव एआई का बहुत बड़ा रोल प्ले है। अगर मेरे पास, मैं फिटनेस में, मुझे क्वेश्चन है कि हाउ टू लूज वेट, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं गूगल कर, तो गूगल में मुझे 150 आर्टिकल मिल जाते हैं। मैं यूट्यूब में जाता हूं, मुझे 500 वीडियोस मिल जाती है, बट मुझे मेरा आंसर नहीं मिलता। और WTF के जिम में हमने ये रियलाइज किया कि हम हर यूजर को ये चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। और बहुत जल्दी मैं आपको अभी एक छोटा सा डेमो भी दिखाऊंगा अपने फोन से लॉग इन करके कि कैसे ये जनरेटिव एआई चलती है, कैसे आप एक छोटा सा सवाल पूछोगे WTF ऐप में, और वो जो फिटी है, फिटी इस एआई का नाम रखा है हमने, फिटी। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी का नाम बता रहा हूं उसका नाम फिटी रखा है। फिटी आपको आपसे ज्यादा जानेगा। फिटी हर दिन ट्रैक कर रहा है कि आपने क्या वर्कआउट किया, क्या खाया है। और अगर आप फिटी से पूछते हो कि आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, फिटी आपको ये बताएगा, देखे क्या आपने कोई लेग का एक्सरसाइज तो नहीं करा था, और अगर किया था तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। एंड फिटी विल आंसर यू। सो फिटी is the revolution that fitness industry will see. मैं आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा and all of you will go crazy कि this is the brand I want to invest. Let's move on. Our vision mission, as I said, we want to become the largest and the most advanced brand of this ecosystem, not just India, but across the India. WTF has to open gyms, not just in India, but globally also. And we want to do that effectively in the next 5 years. And we are very confident कि हम उस direction में बहुत aggressively grow कर रहे हैं.
कोर वैल्यूज क्या है हमारी? अगर मैं कहा कि इनोवेशन होनी चाहिए, हर दिन सिस्टम ऑप्टिमाइज होने चाहिए, हर दिन मैं अपने टेक को, अपने जिम के एक्सपीरियंस को यूजर के लिए कैसे बेटर कर सकता हूं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, चाहे वो अच्छी स्टाफ ट्रेनिंग के थ्रू हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के थ्रू हो, इट कुड बी एनीथिंग। और हर चीज को पर्सनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिटनेस इज पर्सनलाइज। हर बंदे की फिटनेस जर्नी अलग होती है, किसको क्या चाहिए, किसको वेट लॉस करना है, किसको वेट गेन करना है, किसको कोई बीमारी है, किसको नहीं है, सबका रिजाइन, सबकी जर्नी अलग हो। सिंपल एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं मगर तो भले ही हमें बुखार हो, बट डॉक्टर सबको कस्टम तरीके का एक दवाई देता है कि यार तुम पैरासीटामोल भी खा लो, तुम एक्स भी खा लो, वाई खा लो, बिकॉज फिटनेस और वेलनेस इज पर्सनलाइज्ड। एट एंड ऑफ द डे हमें उसमें एक्सीलेंस अचीव करनी, वी वांट टू बी द बेस्ट ऑन दैट पार्ट हियर। WT फ्रेंचाइजी का ओवरव्यू क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे दो मॉडल्स हैं, एक फोफो जो इंडस्ट्री में हमेशा चलता आ रहा है, दशकों से चलता आ रहा है, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेट, बट जो हमारी एक्सपर्टीज, जहां पे WTF चैंपियन है, वो है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटर। दैट मींस आप हमारे साथ जिम ऑपरेट करेंगे, जिम ओपन करेंगे, और उस जिम को अगर आप किसी और फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो आपने अगर एक्स अमाउंट ऑफ उसमें इन्वेस्ट किया है, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए टू ओपन अ जिम ब्रांड, आपको उसके बाद डेली खुद ही काम करना पड़ेगा उस पैसे को रिकवर करने के लिए। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजीज दे डू नॉट फ्लरिश, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती, क्योंकि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या ओनर है वो एक जिम एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास में रिसोर्सेज नहीं है कि वो जिम की हर चीज ट्रैक कर सके, उसको मॉनिटर कर सके, उसको बेटर कर सके, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो रिटेंशन हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो बेसिक स्टाफिंग, इट कुड बी एनीथिंग। And that is why WTF का FOCO model is the most preferred model। हमारे 99% जिम पार्टनर्स या फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर्स FOCO में हैं, जो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, और WTF फिर उनके साथ उसको एक प्रॉफिटेबल रेवेन्यू और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में ऑपरेट करता है 5 साल के लिए। सो दैट इज द बेनिफिट कि हम आपको जिम खुलवाएंगे नहीं, सिर्फ हम उसे चलाएंगे भी। तो जितनी भी बातें मैंने बोली हैं अभी तक, वो सब कुछ हर एक सेंटर में इंप्लीमेंट होगी, एंड दैट इज द पावर ऑफ अ FOCO मॉडल। Now, why do you choose us? As I said, we are revolution. We are the future of fitness industry. और ये मैं से बोल नहीं रहा हूँ, मैंने एक $multi-million जॉब छोड़ी है यूएस में टू बिल्ड अ $multi-billion ब्रांड, और उसको इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ बिकॉज ये नीड ऑफ द आवर है। 2 लाख करोड़ की मार्केट जो अगले 5 साल में कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ की होगी। इस मार्केट में वी नीड टू बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर, और मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए, बिकॉज अगले 5 साल में टेक्नोलॉजी ही इस दुनिया को रूल कर रही होगी। We are established brand, 60 plus gyms running across NCR market, now expanding to Lucknow, Indore, Bareilly, Meerut। इस महीने हमारे 2 नए फ्रेंचाइजीज खुल रहे हैं, तो that is also a very interesting thing। मार्केट पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया कि इट्स अ ह्यूज मार्केट, और WTF कंट्रोल कर रहा है सारे एंगल, चाहे वो जिम हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो ट्रेनिंग एकेडमी हो। वी हैव गॉट द मोस्ट बिगेस्ट पार्टनरशिप फ्रॉम द वर्ल्ड एक्सक्लूसिवली, सो वी आर नाउ काइंड ऑफ लीडिंग द शो इन द मार्केट। और अगले साल, एंड आई एम गोना गिव यू हेड्स अप, हम इस इंडिया का सबसे बड़ा फिटनेस एक्सपो करने वाले हैं। सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट जिम ब्रांड इन दैट इकोसिस्टम मार्केट, और जिम ब्रांड ने आज तक ऐसा कोई एक्सपोजर दिया नहीं है मार्केट को। सो वी आर गोना बी मूविंग इन दैट डायरेक्शन, सो दैट हम मार्केट का बड़ा शेयर भी कैप्चर कर सके। और इवेंचुअली हम, एज आई सेड, कि हमारी फ्रेंचाइजी का यूएसपी क्या है कि मैं आपको डे टू डे ऑपरेशनल सपोर्ट दूंगा। सपोर्ट इज लाइक वी विल रन द जिम फॉर यू, अनलेस यू से कि नहीं विशाल मुझे ही चलाना है, वी विल अगेन गिव यू ऑल द नेसेसरी सपोर्ट। बट FOCO, एज आई सेड, वी आर चैंपियंस इन ऑपरेटिंग द जिम, बिकॉज जिम खोलना तो बहुत आसान था, बट चलाना इज द हार्डेस्ट पार्ट। What makes us unique, attractive? Tech, that is, I said, trained professional staff, because that is the need of the hour। मैं कितना मर्जी जिम अच्छा कर दूं, मैं वहां पे सोने की मशीन्स लगा दूं, बट अगर जिम में स्टाफ अच्छा नहीं है, when I say staff अच्छा is in, it is not trained, it is not well personalized, you will never be able to run a profitable gym। And that is why we have ensured कि हम जिम में स्टाफ भी खुद ही ट्रेन करेंगे, because जॉब गिवर हम हैं तो क्रिएटर भी हमें ही बनना पड़ेगा। And that is why we leverage artificial intelligence technology, and again उसको यूज करके क्या कर रहा हूं मैं, चर्न रेट कम कर रहा हूं। चर्न रेट का मतलब होता है कि इस महीने 100 लोग हैं, तो अगले महीने अगर मेरे 50 लोग चले गए तो मेरा 50 लोग का चर्न हो गया, मुझे उन 50 को रख के 5 में ही रोकना है कि चर्न रेट किसी भी जिम में 5-10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमने इसमें चैंपियनशिप अचीव करी हुई है, डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, वी हैव डन दिस फॉर मल्टीपल जिम्स देयर। एंड अगेन जब आप ये सब कुछ करते हो तो क्या एनहांस होता है, यूजर का सैटिस्फैक्शन एनहांस होता है। एट एंड ऑफ द डे ये सब कुछ मिला के हम बहुत एग्रेसिवली एज अ ब्रांड मार्केट में ग्रो कर रहे हैं इन द नेक्स्ट few months, few years down the line। What do we also give? हम अगर कोई जब भी कोई फ्रेंचाइजी ओपन होती है तो इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहां पे हम ऑप, सेल्स, मार्केटिंग, एंड टू एंड ट्रेन स्टाफ रखते हैं टू मेक श्योर कि जो एक्सपीरियंस हम कमिट कर रहे हैं वो हर WTF के जिम में कंसिस्टेंट हो, राइट फ्रॉम मेंबर के एंट्री करने से लेके उसके एग्जिट तक, उसके मेंबरशिप सपोर्ट में, उसके डेली वर्कआउट में,
everything has to be as per the brand SOP, and we are very, very strict when it comes to the brand SOP, because यही objective है WTF को open करने का, इस brand को बनाने का. Again, if you're running a FOFO model, we'll give you ongoing support, we'll give you everything that is required to run the job. And end of the day, we give you all the technology support, we'll give you business reviews again, and we make sure that every center is having its own metric. और ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है स्क्रीन में ना, ये मैनुअल नहीं, सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन. आपको हर दिन एक यूएसपी दिखेगी अपने डैशबोर्ड में, सब कुछ दिख रहा होगा. मेरा जिम किस लेवल पे चल रहा है, क्या ये ग्रोथ पाथ में है, क्या ये डाउनफॉल पाथ में है, कितने मेंबर्स जा सकते हैं, कितने मेंबर नहीं गए, कितने मेंबर चले गए. नो, वी हैव ऑल द डेटा. अब डेटा का बेनिफिट क्या है कि जितना दिखेगा मुझे डेटा, मैं उतना ही ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा. दैट इज व्हाई unless you don't see a problem, you can't fix it, and that is exactly what we do in this case in terms of support and training aspect. Franchisee requirement, I think the only thing that we need from people, if you are you have a passion for fitness and wellness, great. If you are thinking that I need to make an investment, I need to make the investment multifold, great. If you think that I am looking for some kind of financial stability, some ROI, great. You are a right fit for the WTF brand to open this as one of the best investments that you will ever make over the next few years. Investment requirements, as I said, we take about 85 lakh rupees for a 3,000 square feet real estate, and we take about 5 lakh of franchisee fee in that case, which helps us to sustain for a longer run. And this period is for 5 years, 5 साल के लिए franchisee होती है, जिसमें estimate return is that if you take a FOFO, you will get about 50-60%. But if you take a FOFO, in which we ensure that we are the one giving you the job, we give you an 18% of the minimum guarantee, and we also share the profit. When I say and, either 18% of the minimum guarantee you will get annually for sure, या फिर जो month on month जो हम लोग profit share करेंगे, which is about 50% between WTF and the franchise investor, we do that. So whichever model that you choose, you are going to be in a win-win situation. But yes, I always recommend people कि आप FOFO ही लो, ताकि हम आपके साथ आपका जिम रन कर सकें, आपका headache कम हो, versus क्योंकि हम experts हैं इस चीजों करने में day in day out. So let us do the job that we are good at. Now, this is something I would say, from WTF perspective, we understand the franchisee investment models. We have certain partners जहाँ पे हम lending partners हमारे पास है, जहाँ पे investors के पास probably full capital नहीं है, we can support in full capital. कई जगह में ऐसा हुआ है कि WTF ने co-invest भी किया हुआ है, जहाँ पे franchise investor ने बोला कि मेरे पास 50 लाख रुपए ही है विशाल, what can you do? We say कि ठीक है, बाकी पैसा हम डालेंगे. So we are in position जहाँ पे capital का issue कभी आता नहीं. Yes, we want the committed gym franchisee partners who can really help help the brand to grow and be a part of this on an everyday basis. So that's everything. So be a part of this game changing fitness brand, my friends, and that's pretty much what WTF is all about. And before I let the franchising team kind of talk more, let me also show you the glimpse of the tech that I've been talking about. Yashika, if you can please allow my, give me a sec. Okay, I think I'm there. Let me see if I can share my screen. Okay. So मैं आप सबको अब वो दिखाने वाला हूं जिसकी मैं बात कर रहा था. So WTF की ऐप को मैं दिखाता हूं जिससे WTF पूरा ऑपरेट होता है. WTF का entire app gets operated through this app. Now look at this. So मैं FITI की बात करता हूं जो सबसे crazy feature है. So if you go to FITI, if you open this app and you go to FITI as a section, now this is FITI. FITI is the most intelligent artificial intelligence bot for fitness which has ever existed. So if you look at, let's say मैं एक basic सा question पूछता हूँ. Let's say let's say I want to lose weight. I am, let's say, 90 kgs. I want to get to, let's say, maybe 70 kgs. Make a plan for me. Now look at this. This is real-time artificial intelligence only available to WTF exclusive member. तो इस टेक्नोलॉजी की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ WTF पे, and this is the craziest part that we have. Now ये जो FITI जो ऊपर लिखा है, ये FITI हर दिन आपको एनालाइज करता है, हर दिन आपके वर्कआउट को समझता है, आपकी नीड्स को समझता है, and it helps you to understand that. Now, because we said everything needs to be personalized, अब आप देखोगे आप FITI is helping you. Now, if you can keep talking to FITI throughout the day, जितना FITI से बात करोगे उतना FITI आपको जानेगा, उतना बेटर आपको आंसर करेगा. That you can see, can tell कि आपको अगर वेट लूज करना तो क्या करना पड़ेगा, हेल्दी ईटिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्टे हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा. अगर मैं से बोलता हूँ कि मेक लेट्स से 7-day वर्कआउट प्लान, जस्ट हाइपोथेटिकली लुक एट दिस, ये 7 दिन का वर्कआउट प्लान ही बना देगा.
आपके लिए immediately. This is the level of technology. Now imagine करिए आप एक WTF जिम के ओनर और आपके जिम से ये चीज हो, क्या प्राउड मोमेंट होगा जब लोग आपसे आके बोलेंगे कि यार आपके जिम में तो कुछ अलग ही हिसाब से काम चल रहा है. And that is the proud, that is the moment I want to give everything. So everyone, if you have any questions, please उसको Q&A पार्ट में डालिए, because I think यहाँ पे हम म्यूट करके बात नहीं कर सकते. तो प्लीज मेक श्योर आप सब लोग Q&A सेक्शन में क्वेश्चंस डालना शुरू करिए. एंड आई एम श्योर आपके सबके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज आई एम हैप्पी टू आंसर ऑफ देम. लुक एट दिस. This is now workout question part. This is the real time artificial intelligence जिसकी मैं बात कर रहा था कि इंडिया में WTF से एडवांस टेक किसी की भी नहीं है. एंड इफ यू गो बैक हियर, यहाँ पे हर यूजर का एक शेड्यूल आता है. उस शेड्यूल के अंदर यू कैन सी उसको डेली उसका वर्कआउट पता होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है. उसकी अपकमिंग हिस्ट्री यहाँ पे दिखती है, उसका हिस्ट्री दिखता है, वो आज क्या करना चाहता है, जिम में कौन उसका ट्रेनर है. Every single thing is controlled by the user. And if you go on nutrition section, I'm not sure if I have a diet plan also. यहाँ पे आपको डाइट प्लान भी मिल जाता है. आप देखेंगे यहाँ पे आपका डाइट प्लान भी आ जाएगा. वो डाइट प्लान इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा आपके प्लान के साथ. मोर इम्पोर्टेंट, जब भी कोई यूजर जिम में आता है हमारे, हम उसकी फिटनेस प्रोफाइलिंग करते हैं, जहां से हमें ये रियलाइज होता है कि यूजर किस स्टेज पे खड़ा है. तो अगर मैं अपने बारे में कैलकुलेट करता हूँ, लेट्स से मेरी वेस्ट फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल 36 है, नेक इज 20 and मेरा current weight, let's say I want to go to 90 kgs just in case, and I want to do next, everything is there. Look at this. Now this tells me where am I standing right now. Based on this, you can see I'm also getting, now Fitty knows it now. The moment मैंने ये एक्शन लिया, फिटी को उसके बारे में पता. और इमेजिन करना, ये सब चीजें जब मेरे यूजर को पता होती हैं, तो यूजर के लिए WTF के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं, बिकॉज उसको जो सर्विसेज हम एज अ ब्रांड एक अफोर्डेबल रेट में दे रहे हैं, वो मार्केट में कोई भी दूसरी जिम ब्रांड नहीं दे सकती. मैं लोकल जिम्स की तो बात ही नहीं कर रहा, बट कोई भी दूसरी ब्रांड इस चीज को दे ही नहीं सकती. दैट इज व्हाई WTF is growing like a fire, and that is it. So that's pretty much from my side as a presentation, and I hope you all enjoyed. And now you're going to be part of this WTF journey. So thank you very, very much. And over to you, Yashika and team. Hi, Vishal. Thank you for this wonderful presentation that you gave to all our viewers. We have so many of them who are watching also live, and we also have a big audience that has attended the webinar. So I'll start with taking some questions from our audience and quickly also recap, friends, the model. Please keep writing in. We'll take your questions. Do mention the city if you're interested. If you are already in, if you have an access to a property or location, you can even mention that. So WTF is a wellness gym from Delhi NCR, and their focus is promoting the new age fitness and health. And you saw from the apps, and we saw that function live with us. And they have an exclusive WTF app and fitness centers, which they are operating currently out of Delhi NCR. But after making a robust business model, profitable centers, they're looking at now going across because technology is a very big USP with them. And through the technology, they're able to take care of operations in the most efficient manner. They also have a very, and just to add on to the technology, a very strong tech. And like I heard Vishal talk about, which is the strongest in the entire country, which helps them to standardize the operations. And there is a heavy integration of robotic artificial intelligence, right? And today, if you look at the subscriber, he's looking at a lot of intelligence in their, fitness program. And the industry overall, even the gym industry today is moving from unorganized to organized to specialized. And now is the time for the industry to get personalized, right? Because your fitness goals are personalized. You don't have generic fitness goals. And I saw in the presentation also, we shall talk about it. Even if you have a problem with maybe your feet, they can guide you what has gone wrong in the exercise. So to that level, they have integrated personalization in the business model. They're an integrated player, which I think is a very big USP, and a full stack model when I say with their exclusive partnership with IFP, the retail business with supplements, and also machines, which I heard Vishal, they would be integrating. They also own the academy where all the trainers come from. So from retail to academy to gym to the entire supply chain, and also big expo, which they're coming up in the month of November. All that is integrated to position and leverage their position to build the brand equity. And over the last 1 year, they started in 2022. We have not even completed 2023. So what I see in a span of almost 1 year, they have been able to operate profitably. These are not just locations which are operating, but all these locations are profitable locations, which means that these 60 locations on an average, one gym was opening every 5 days.
and which requires a lot of integration backend with technology, supply chain, everything put together to make it possible. I've not seen gyms opening at a speed of 5 days. That's what they have integrated. So today, we'll talk about overall business model. I think a glimpse of that we saw in one of the slides. So there are two, rather one model we are looking at, which is a 3,000 square feet of space, and at that entails an investment of 85 odd lakhs with a franchise fees of 5 odd lakhs. And Vishal, if I can go a little bit deeper into understanding the model, and before we understand the model, I would also want, because every time, and I saw somebody even asking on the competition, and you talked about there's some USPs that you have, including technology. But if you want to give example of maybe two or three elements, which make you very, very different, you talked about also affordability, and I think that's a very, very big, breakthrough that you have done. I know what subscription fee that you take annually, but anything, 3 or 4 points that you think, have made you successful. People are opening gyms, they are all expanding, and I see a lot of gyms doing that. But to make it profitable, is something which people have not been able to do. And given the fact that you have done that in a span of 1 year, over to you. So let me ask, I see a question from Riddhi. Riddhi is asking, what is the major difference you're offering expect AI from MOF, Gym and Gold Sim? So let me tell you, Riddhi, first of all, that's not AI. जब हम artificial intelligence की बात करते हैं ना, it is models. Models are self-learning capabilities. और India में, and I'm not boasting myself, right? I mean, it's not because मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, but I am one of the highest paid machine learning engineers in the world. One of the highest paid. अब तो मैंने छोड़ दिया काम, but that's what I am. So ML models ही नहीं, modelers ही नहीं, तो कोई model बना ही नहीं सकता. That's one thing. Number two, to build a model, the cost is too high. To hire people like me at a company, you have to spend close to 2 to 3 crores annually to hire someone like Vishal Nigam. And to build a model like this, you need 5-7 people. So you can imagine the kind of investments we've done in technology. अब AI करती क्या है? Let's say if you go and you talk to FIHL. FIHL learns you. FIHL knows about you every day, and FIHL can become your best friend over a period of time. So you don't have to Google it, you don't have to YouTube it. FIHL has everything for you. जिम एंगल से मैंने कहा कि मुझे अगर सपोज करिए मेरा एक जिम लुधियाना में खुला हुआ, मेरा एक जिम लखनऊ में है, मुझे नहीं पता कि जिम ऑपरेशनली कितना सस्टेनेबल है, वहां पे हॉस्पिटैलिटी कैसे मैनेज हो रही है, क्योंकि मुझे स्टाफ पे भरोसा करना पड़ता. बट नाउ वी हैव दिस कैमरास व्हिच हैज आवर FIHL मॉडल डिप्लॉयड, जो हर घंटे ये ट्रैक कर सकते हैं कि जिम में कौन सा ट्रेनर आइडल बैठा हुआ है, वो इमीडिएट रियल टाइम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, वो ये देख रहे हैं कि हर घंटे का जिम में मॉपिंग हो रही कि नहीं हो रही है. That means hospitality level पे भी हमने टेक को डिप्लॉय किया हुआ है. I can predict, predict कर सकता हूं कि इस महीने या अगले महीने जिम में कौन कौन से कस्टमर्स जा सकते हैं, और अगर मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कौन जा सकता है, तो मैं उनको रोकने के लिए भी एफर्ट डाल सकता हूं. और मोस्ट ऑफ द जिम्स they kind of mess there. Don't care. XMOF or Gold for example, they're not even close. ये जो हम बात कर रहे हैं ना टेक की, इंडिया में टेक इज अ जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. एंड WTF का जो टेक है ना, मतलब अगर आप एक जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लोगे, दैट इज लाइक 0.0001% ऑफ व्हाट टेक वी हैव बिल्ट. जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज नथिंग. व्हाट वी हैव बिल्ट इज अ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम. ट्रेनर के लेवल पे उसकी ट्रैकिंग हो रही है, उसका एक्सपीरियंस, उसकी जर्नी, मेंबर के लेवल पे, और इवेंचुअली जिम ऑपरेशन लेवल पे. सी मैं समझा, एंड ऑफ द डे वो मेंबर ही है जो हमें पैसा देगा. उस मेंबर को ही हमें एंड टू एंड ट्रैक करके खुश रखना है, उसके एक्सपीरियंस को इतना इनहांस करना है कि अगर वो कल को सोचे भी ना कि यार मुझे बगल वाला जिम 100 रुपए सस्ती मेंबरशिप दे रहा है, then he would say कि I will not get all these things that WTF gives to me. And that is the reason my members are loyal, and not even loyal, they are loyal and they bring referrals every month, because that is what they get in there. They want to bring their mom, they want to bring their dad, they want to bring their wives, and that's the power of tech that we have built, because they can use this tech for their family as well. That's the benefit. How many gyms are you planning to open for Mumbai? How much will be my territory when I open? I think that's the question Sonia can answer better, because I don't understand the territory part, so I'll skip that part. My name start with more than 2 years. How? See, very good, interesting, Rupesh. Interesting. किसी भी जिम में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है इक्विपमेंट्स में. आप अगर कोई भी जिम ब्रांड लोगे, they will say कि I will bring a US fitness, machine brands of Life Fitness or XYZ brand, right? आप समझना, जिम में मैंने पहले क्या कहा कि मैं सोने की भी मशीन लगा दूं ना, machines never run the gym. It's the experience that changes the user behavior. यूजर का एक्सपीरियंस डिफाइन करेगा कि मैं इस जिम में जाऊंगा या नहीं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो WTF हो, चाहे वो एनीटाइम, चाहे वो व्हाटएवर हो.
So it's the experience. So we have, because हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं मशीन, इसलिए हमने कॉस्ट को ट्रिम डाउन कर लिया है तभी, क्योंकि किसी भी जिम में मशीन्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं कोई XYZ यूएस ब्रांड की मशीन लूंगा तो 3000 फीट के जिम में 1.5 से 2 करोड़ किसी मशीन ही आ जाएंगी। And we are able to bring that cost down. That is why we are the most affordable gym franchisee in the country. So हमारी machines की quality में कोई कमी नहीं है, because समझना हम खुद import कर रहे हैं, so we are the one knowing what is required. And in machines, when I can just tell you some of the future plans, in the next 6 to 12 months ये सारी machine IoT sensors के साथ deploy होंगी। That means अगर मैं जिम में जाके leg press कर रहा हूँ, so we are going to create a ring which is very soon going to be developed in the next 6 to 12 months time, जो कि हर यूजर को मिलेगी, जिससे उसकी फिटनेस रियल टाइम ट्रैक होगी। वो ये देख सकता है कि मैंने कितने रेप्स एक्चुअली मारे, बिकॉज मशीन्स विल हैव दोस सेंसर्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक दैट शायद इस देश ने देखी है और शायद हमारे आसपास अगले 5 साल में कोई आ नहीं पाएगा। दैट इज द रीजन, बिकॉज अगेन सी आई कम फ्रॉम अ यूएस बैकग्राउंड, नॉट बिकॉज आई हैव बीन देयर। यूएस इज 5-10 years ahead of technology, and the things that I have seen there, I am bringing them here in India. So imagine करना, ये चीजें लोगों को मिल रही है ना। मैं फॉर एग्जांपल, मैं कानपुर जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के हाथ में दे दी है। That is the power we have built, and we have to be proud about what we have done. So imagine करोगे अगले 5 साल में इंडिया के हर tier 2, tier 3 cities में अगर हम इस तरह की टेक बिल्ड कर सकते हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस है फिटनेस में, then there will be no one bigger than us, larger than us, and most lovable than us. Then we have something. Well, I'll take questions, allow me to do that. And before we jump on to these questions, I wanted to have a little deeper explanation on the business model. So we have talked about 2 business models. One is franchisee owned, company operated. The other is franchisee owned, franchisee operated. Now, what are the fundamental differences between the two? What is that a FOFO would have and a FOCO would not have? And then I'll go on a little bit on understanding of what it entails in terms of operation expenses, initial capex breakup. Yes. So सबसे बड़ी तो FOFO is like any traditional FOFO brand that works कि हम आपको 85 लाख रुपए में we will help you to open the gym, brand new gym, right from like being a real estate all the way to running center. Now in that case we help you when pre-launch the gym, we'll do pre-sale, we'll give all the support to launch the gym. In a FOFO model उसके बाद हम आपको initial staff भी देंगे, but day-to-day operation जो सबसे बड़ी problem है, which is the ensuring the user experience, उसमें obviously you are the one leading the show. फिर आप responsible होगे यूजर के एक्सपीरियंस के लिए, like any other FOFO model work, you are the one running the gym, and then obviously the returns and everything belongs to you. So your revenue, everything becomes your part, and we basically help you open the gym, and we give you every support from the backend side, चाहे वो training हो, चाहे वो technology हो, चाहे वो marketing, we keep doing that. But day-to-day operation आपको as a franchisee owner करना पड़ता है. That's a major difference. FOCO में this becomes different. FOCO में does he pay any royalty also, whatever sales revenue? Yes, I think there's about 8% of royalty that someone has to pay to WTF for them, because we are anyways investing every day in the gym to ensure the brand is there. We have to help the gym to follow the SOP. So there is an investment that is going to be consistent in the gym even through in the FOFO model. Okay. And then FOCO is where, as I said, the championship is all about कि gym अब चलाएंगे भी हम आपके लिए. That means FOCO में you are the one running day-to-day operation. FOCO में we run the day-to-day operation as well. That means we will ensure कि वहाँ पे staff हो, technology हो, hospitality हो, personalization हो, hygiene हो, everything that's required to run as a center, as a professional club. We will ensure we run that, and that's what it is. Now FOCO में सबसे बड़ी USP क्या है कि जो franchisee investor है उसको अब अपना पैसे की ROI निकालने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. WTF is doing that job for you, and why we are doing this? Because we know that कि franchisees gyms की sustainable क्यों नहीं हो पाती हैं 2-3 साल बाद, and most of the there are hundreds of examples which has happened in the past in India in the last 50 years I'm talking about कि लोग franchisee open तो कर लेते हैं gyms की. Gym and restaurant are 2 different things. Restaurant is small space, तो revenue भी छोटा है, but gym is a big space, so revenue भी बड़ा है. But then the more the revenue is, the more responsibilities you have. और वो responsibilities user और जो एक end gym owner होता है वो कर नहीं पाता, because there are too many dynamics which are there. So when we come and operate in the gym, we run a profit sharing model. कि gym में let's say 3000 स्क्वायर फीट का gym है, हमने वहां पे 10 लाख का रेवेन्यू किया हाइपोथेटिकली, उस 10 लाख में हमने 4 लाख के जिम के खर्चे हैं, which will include electricity bill and rent and staffing and whatever that is required to run the gym. उसके बाद जो भी पैसा होता है that is shared between 50-50 with gym and WTF. So let's say 10 लाख के रेवेन्यू में 3 लाख रुपए जिम ओनर ने कमाया, और 3 लाख को मल्टीप्लाई करोगे by 12, that's making 36 lakh rupees on annual. So if you go for a 5-year plan, we're talking about 1.8 crores of worth of ROI, which is more than what you can ever make it by yourself. And this is
a completely risk-free ROI. क्यों? क्योंकि WTF is working its and you can imagine the brand is working on their own. Brand तो ज्यादा ही काम करेगी, because जितना पैसा बनेगा उतना ही profits बनेगा. So we are going to work harder, more every day, and because क्या है, हम सब कुछ एक grand level में करते हैं, तो it is easy for us to manage things on the granular level also, because we have been doing this every day for us. So that's the major difference between the FOCO and the FOCO, and the FOCO model. Now, we also saw there's a minimum guarantee component that you've kept at about 80%. Now, you want to give a little explanation on that. How is that 18% calculated? Is that on the entire 85 lakhs one? How is it transferred to a franchisee? Is there a monthly structure cycle? So basically the way this works, कि हर महीने हमने, so 18% is basically to safeguard the investment of the investor. And this is on 85 lakhs, the entire investment. 85 lakh, the investment amount, right? That 85 lakhs पे हम आपको 18% minimum guarantee. ये तकरीबन आपका साल का 15,30,000 रुपए आपका. Correct. And this is to safeguard the investment, ताकि उनका जो capital है, वो capital safeguard हो, and that is the reason. And what we do also, we do a profit sharing. So whichever is higher. So let's say साल में मैं आपको 15,400 तो दूंगा ही दूंगा regardless. But when we are operating a gym, obviously हमारा focus उस 15 पे होगा ही नहीं, हमारा focus होगा to make profits. So profits, if they're higher, then you will be getting share the profit on a month-on-month basis. But if you're talking about the MG is also be shared on month-on-month basis. आप उस पैसे को divide कर लो. So suppose तो महीने का मोटा-मोटा 1.25 लाख रुपए होगा, तो 1.25 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा आपको regardless. It can be more than that, and it will be more than that, but that's the minimum you get. So your investment is safeguarded for the entire period. विशाल, आप थोड़ा सा बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू मॉडल समझने के लिए कुछ चीजें which I would also like to understand, and I'm sure a lot of our audience, when we talk about a revenue share, typically, if you can throw some light on our expense structure also, what is the potential for a gym, for a 3,000 square feet of gym, what is the ideal number of subscribers ideally one should have, how long does it take to get that subscriber, कितना gestation है इसके अंदर, क्या हमारा average ticket size हम लेते हैं, और हमारे खर्चे क्या हैं, and is there a thumb rule, and I say, this percentage goes towards the rent, this percentage goes towards my staff, this percentage goes there. If you can also maybe as a thumb rule explain how unit economic works. Absolutely. So if you look at it now, this is something very interesting, right? So in any gym, so let's start from the revenue perspective. 3,000 square feet का gym है, एक 3,000 square feet के gym में 300 लोग on a month is what the capacity that we can entertain and we should entertain. WTF month एक मेंबर की कॉस्ट को 2,000 रुपए लेके चलता है कि मुझे एक कंज्यूमर से 2,000 रुपए अर्न करना है. That means 3,000 into 2,000 is basically 300 into 2,000 is 6 lakh रुपए. That is from the basic membership. Then we prefer to sell the add-on, which is personal trainings, supplements, accessories, anything that is there to do the group PT classes, Zumba classes, etc. That is going to add another 4 lakh of rupees in the revenue. So we expect कि मेरे पास 300 लोगों में से 10 लाख का मैं टॉप लाइन करूंगा. उस 10 लाख में से लेट्स नाउ गो विद एक्सपेंसेस. किसी भी जिम में, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, किसी भी जिम में अपार्ट फ्रॉम रेंट बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट स्टेबल होता है. सो स्टाफ कॉस्ट, you take the electricity cost, you take the marketing cost, you take the housekeeping cost, they're pretty much the same. They cover somewhere about 50% of the cost on a month-on basis. Rent is the one that plays the majority. And a lot of gyms I've seen, they have died because the rent was too high. They did not do the right dealing with them. So let's say किसी जिम का रेंट ही 2.5 लाख रुपए है. So 2.5 लाख रुपए for a 3,000 square feet property would be great in a position जहां पे आपको महीने की, जहां पे जो locality है ना, that's also a paying locality. So when we step into that partnership, we help the gym franchisee investors to find the best places, because we are not going to open a gym in a place जहां पे already posh इलाका हो. And उसका reason क्या है? Because the target audience is already the people who are going to some local gyms. So we want to take a place जहां पे कोई brand नहीं है already. Gyms तो बहुत सारे हैं, but we want to establish a brand. So उस area में niche डालना is important. तो जब 10 local में से एक brand खुलती है ना, तो local वाले अपने आप brand में convert हो जाते हैं. So that is why we are able to reduce the rent somewhere. But we always think कि हमारा जो top line है expense, वो 5 लाख के ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए. On any given case. And again, rent contributes to the majority of it. And अगर इस केस में इंटरेस्टिंगली किसी इन्वेस्टर के पास खुद की प्रॉपर्टी है, तो उनके लिए एक बेटर प्रोपोजिशन बनता है कि उस इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी अगर वो लेता है कि आई हैव अ प्रॉपर्टी ऑलरेडी विशाल एंड आई विल डू दिस. सो आप समझो, क्योंकि हम रेंट को ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर रहे हैं कॉस्ट टू ऑपरेट में, उस इन्वेस्टर को रेंट भी हम देंगे. That means with this investment, you get the rental as well as the profit sharing. So that's one of the other good elements. But yes, उस केस में we are very choosy कि it's not necessary कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो हम खोलेंगे ही खोलेंगे जिम में.
The property has to pass our, metrics that it is demographically right located and it is in the accessibility area. And जो basically हमारी property की metrics हैं, वो अगर pass होती है, then that is also a very good proposition for someone who already has a property in that case. And then the remaining money gets shared between WTF and Jim on a 50-50 ratio. Right. And we are charging a monthly fee from our clientele, or this comes as an again, so किसी भी जिम में फोकस हमेशा होता है कि वी शुड सेल दिस 6 months और एनुअल, राइट? जो मैंने आपको 2000 का ब्रेकअप दिया, वो मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक कस्टमर से 2000 रुपए लेगी ऑन अ मंथ बेसिस. लेट्स से Sonia joins a gym for a month annual membership of let's say 14,000 rupees. So our annual membership goes somewhere about 11,000 to 14,000. अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा, then Sonia is giving me close to 1,000 rupees a month. अब मुझे पास सोनिया 12 महीने के लिए, तो 12 महीने में सोनिया, I would be selling any other product to Sonia, which will convert to another 12,000 rupees, which eventually converts her membership to 2,000 rupees per month. So that's how we do. So we focus on when any gym focuses on making sure that we have the maximum customers for a longer duration, which is 6 months and 12 months. And that's how the focus is. And that's why you have most offers running on the 6 month and 12 month membership with multiple combination ki 12 mahine pe 2 mahine free, and then you get X amount of PT sessions, you get Zumba class, etc. The monthly membership is the most costly. And then the other one is the annuals are the kind of the cheapest one, but the annual gives you the customer for a longer run. ताकि आप उन पे you can play and have more opportunities to get them, because every customer needs different products. And now WTF is also launching its own t-shirt and stuff like that. So we are actually getting into more and more products, because हर gym user के पास products की need तो होती है, चाहे वो supplements हो, चाहे वो merchandise हो, चाहे वो accessories हो. So we're getting into everything slowly gradually. So that will also help us to make sure that 10 lakh का revenue वो cover up हो ही हो हर जगह से. Helpful. And friends, I want to add one thing. The beauty of the business is such that you don't need a huge working capital, because your working capital is funded by your client itself, right? Because Exactly. Paying you in advance. And like other businesses where you have to ensure that you have enough working capital to sustain the initial few months. If you do your pre-marketing right, pre-launch right, you would not need working capital, because you're funded for an year. And I tell you, the gym I'm launching, the next franchise gym that's getting launched in Noida, Sector 122, I showed you the picture the other day. That gym has started doing the pre-sale about 3 weeks back. We targeted the pre-sale to be somewhere about 12 to 15 lakhs. We've already surpassed 23 lakhs already. We are still left with another 16 days in the month. That gym is getting launched on 1st of September. We're still left with 16 days. So we are now expecting कि जो हमने 12-14 लाख की pre-sale सोची थी, वो already 23-24 लाख हो चुकी है. And we're expecting कि हम 50-55 लाख पे पहुंच जाएंगे, जो हमें expected नहीं था कहीं से भी. वो क्यों होगा? Because of the demography we choose. I'll tell you the reason. That gym is on the basement of a Croma. So हमने जो building choose करी थी इस franchise investor के लिए, वो Croma के नीचे, वहां पे Croma आ गया suddenly. So that is the kind of decision that WTF takes on behalf. And you will be amazed to know, ये जो decision लिया है, ये भी FITI ने लिया था. So you can imagine FITI कितनी smart है. FITI is the one who chose the property for us in the demographic. FITI went ahead, FITI did the Google map research. FITI realized कि इसमें कितनी societies हैं. FITI said कि यहाँ पे इतने gyms हैं, ये लोग हैं. So FITI is the one. When I say technology, this is the power of technology. FITI helps us to analyze किया था ये location पे gym खोलना better होगा versus any other else, and it gives a probability. Wonderful. I'll take a question, but I think we have somebody. I don't know what city is this. We have Mr. Mayur Jhala asking for a property. He's about 1,500 square feet. Para minimum requirement is 3,000 square feet, and which is on the main state highway, good for a gym space. So this is an incomplete question. We cannot give you more information without understanding the exact location. And I will really advise that if you can share complete information with us, and we'll be able to get you on one-to-one call. But I don't know how far, what highways gym is. Basically has to be closer. It is a convenience location where it has to be. It has to be either close to the corporate hubs or closer to the neighborhood. The highways don't work for a business model like that. But we are happy to have more information to see if anything works out. Okay. All right. I have a question from Mr. Arvind Singh asking what risk do we see and how the risk can be hedged? So I think I've answered it, but I'll re-answer that. The risk in any franchisee gym business, let's keep WTF aside for a moment. WTF nahi, is that you invest into real estate, you invest into the machines and equipment, you invest a capex, and you want to get an ROI, and ROI will only come from bringing more and more members every month on month to the business. Now you are the one you will hedge that because you're the one working on that. Then WTF, we are already hedging it by giving you that minimum guarantee. We have already done it from day zero.
तो आपका कैपिटल तो मैंने सेव कर ही दिया कि मैं आपको उतना पैसा तो दूंगा ही दूंगा मंथ ऑन मंथ, बट नाउ आई एम ऑल्सो गिविंग द प्रॉफिट शेयरिंग, आई एम द वन ऑपरेटिंग दैट फॉर यू, दैट मींस पैसा आपका लगा है बट उसको डबल या ट्रिपल करने के लिए काम मैं कर रहा हूँ. So that's how I'm hedging it. And because a brand is working and a brand with God's grace is growing very fast, we are raising a very big round also, which will be announced in the next few months. I can't announce that, but we are doing a very big round at a big valuation. So you can imagine a lot of investors from the global market also betting on us. So that is how we're hedging it. So we are capital flourish, and also, as I said, the expertise that we are proud of is on operating the gyms. और वो हमें पता है कि यार वो problems क्या थी जिसको हमने 2 साल लगा के solve किया. I can tell you as a founder, the first gym that I launched, I was the one sitting at the counter. So I have built this company product from the ground up. कि ground में problem क्या होती है उसको देखा है, सीखा है, fix किया है, and we move from there. So that's how I'm hedging. I'm hedging it from day zero already for you. Like a question मैं FOGO के लिए पूछूंगी, while franchisee owned and operated is simple, where all the expenses are managed by you. So day-to-day expenses, all rent, operating expenses like salaries, everything is सब कुछ. Gym owner doesn't anything to play. And I see a question about Manav Culfit is the best AI. No, Manav Culfit does not even have an AI. Forget about the best. There is no AI. And when I say, Manav, that we have the best tech in the market, I am proudly saying it and using in the market, right? So मैं जो भी बोल रहा हूँ दिखता है. Because I am the guy who has been building it for years for people, right? आज आप Alexa use करते हो क्योंकि दिखती है. That's why it's an AI. So there is no AI in Culfit. I'll tell you why. Because we have certain gyms जो cult के बगल में या cult हमारे बगल में. So we know that part. There is no AI in India. There is no brand that has an AI right now in terms of what we have built. So you have to understand the definition of AI is very tricky, and this is for everyone. I just एक line बोलता हूँ. Artificial intelligence का purpose है to become a utility. आज के दिन हम एलेक्सा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो यूटिलिटी बन गया है कि यार मेरे को गाने सुना दो, मेरा अलार्म सेट कर दो. बाय सेइंग वी कैन डू थिंग्स, दैट्स अ यूटिलिटी. एआई इज ओनली हेल्पफुल एंड व्हेन आई से व्हेन इट इज इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंस मींस क्या? अगर मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि मेरे जिम का मेंबर कब जा सकता है, दैट इज इंटेलिजेंस. अगर मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि कब पोछा लग रहा है जिम में नहीं लग रहा, दैट इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज लर्न्ड ओवर टाइम. दैट इज व्हाट मेक्स एआई इज एन एआई. कोई मुझे response लाके इंटेलिजेंस दे रहा, that is not an AI, right? So we have to understand the definition of AI is very different. And why I'm saying it, because I've been doing this for the last 16 years, so I can absolutely give you more insight on that. Wonderful. Also, I think I see some more questions, and friends, we have already covered. If you think you need to get still on one-to-one call to get deeper understanding, we'll be happy for that. And shall I see some questions on the locations? We see a lot of people from cities outside Delhi also. For example, we have Mr. Ajay Patel from Raipur. He's keen for that location. So would you want to maybe, give a priority list of markets where you want to be in, maybe in order or otherwise? So I think the way we have done this, so obviously NCR may we have become champions. So now we are expanding to the the expansion is on the UP side of it. So Lucknow, Meerut, and in other cities of the UP. Then we also get in the Punjab region, which is Chandigarh, Ludhiana, etc., etc. Then Bangalore and Mumbai is what we are targeting specifically for tier 1 cities. So Bangalore, Mumbai, हमें open करना ही करना है. We are already opening some of WTF owned centers in Bangalore, Mumbai. And then obviously Chandigarh again, Baki Bareilly side of area. So we are expanding there. So we are not, so apart from I think South में Bangalore के अलावा we are not expanding any other place, because Bangalore, the reason we are expanding is the tech hub of the country. So we need to be in Bangalore as a tech oriented organization. So that's the reason. Yeah, that's how we are expanding. So how about Raipur? You want to comment on this city? Sorry? Stage Raipur. I think we had Mr. Ajay Patel, sorry, from Raipur. Raipur can be doable. It's a decent tier 2 city. Yeah, and also last time I remember we spoke. Would you be open, while we didn't talk about is for regarding this in the webinar, is somebody already operating and owning maybe a gym? Are we looking at maybe converting that to a WTF gym? Is that something we would also be considering as a inquiry or entertain these kind of inquiries coming in? Sorry, I didn't hear the last question. Conversion, because last time we spoke, I remember we also talked about if somebody already owns a gym and, would want to convert to a WTF yeah, gym. absolutely. Is there a possibility we can do that? And yes. We do that. And I'm sure there's some requirements of the infrastructure that needs to be done. And if somebody already owns a gym, what do you have as a guidance on that? WTF, as you know, Sonia, it started with this model where we took an existing gym from the market and we repackaged, rebranded as a WTF brand gym. So that is absolutely, if someone is already having a gym or someone that is having a gym, we have been doing this successfully, jahan pe we hum existing gyms ke sath partnership karte hain for a period of 5 years.
where we only take the franchisee fee. There is no capex, or capex already deployed. And then there's whatever initial investments is required, WTF does it in the center. And then we do a profit sharing model of, again, the same 50-50%. And we all become the operator for that. So whatever happens in a franchisee after the franchisee opened is the same happens in an existing gym as well, in which we just take the franchisee fee from the gym owner and we convert them as a co-branded gym. So if the gym is ABC gym, it will become a WTF ABC gym. The video I showed you was one of the gyms that we have there. I think Shaktiji, you're asking about the rental. So we talked about the rental. Whatever is the prevailing market rental, based on that, it would be paid. But provided the location is approved, not anybody owning a property default qualifies to put up the gym there. It is only based on the metrics given approval by the company. मतलब अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, that does not make कि हम उस प्रॉपर्टी में जिम खोलेंगे ही खोलेंगे. अगर वो प्रॉपर्टी, मैंने कहा, डेमोग्राफिक्स हमारे डेमोग्राफिक को पास करती है कि वो उस लोकेशन में जहां पे जिम फ्लरिश होगा, तभी हम उस प्रॉपर्टी को कंसीडर करें. और कंसीडर करते हैं, जैसे हमने कहा कि हमें एनीवेज रेंट देना ही देना है रिगार्डलेस, तो वो रेंट आपको मिलेगा. तो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी में रेंटल भी आने लगेगा, प्लस आपकी प्रॉपर्टी में ब्रांड भी रहेगी, उससे वैल्यू भी बढ़ जाएगी. एंड देन यू विल गेट प्रॉफिट शेयरिंग एज वेल. सो यू विल हैव 3 बेनिफिट्स फ्रॉम देयर. But there's a big if in that, if it gets approved from our team. Subject to approval. Absolutely. So friends, I thank you all for being with us today. I see the inquiries which we have received today, and a lot of people who have joined in. We have a team which is handling the project Pan India, but centralized Delhi, we have a project leader who is Tarun and his team, who will ensure that they reach out to every single member by the end of the day. We'll be more than happy to come on any one-to-one meetings or a call, and especially if we have investors from Delhi NCR who are interested, we would really recommend you to come and visit the existing centers. And there's also launch which is coming up very soon. Shall you want to tell them on the date of the launch? And maybe if anybody is looking to be invited, we'll be happy to give you a formal invite to come and be at the launch on the day, which is happening in Noida. What date? It's sector 122, and this gym is getting launched. I think the tentative date, let me tell you right now, we're looking at about 4th of September, the first Monday of September. Wonderful. Well, एक चीज और मैं जो मैं लूंगी, while we talked about the area, I think I see Anshu talking about it, but locations आप कौन सी advise करोगे? What kind of neighborhoods, would you advise? What locations? I'll tell you, there are 3 kind of neighborhoods which are great for gym, right? Either it's you're in the vicinity of societies, either you're in a vicinity in some kind of markets or college or corporate hubs, right? Because हमारा gym के लिए एक सबसे बड़ा जो plus point है, negative point है कि no one will travel more than 3 kilometers to a gym. No matter the best the gym that you have in the world. So 3 kilometer radius में अगर मेरे पास एक crowded ecosystem है, चाहे वो market का हो, running market का हो, चाहे वो colleges का हो, जो corporates का हो, societies का हो, that's the perfect location that we can look for gyms primarily. And meanwhile we're doing this, I just want to make sure I show one quick thing for everyone so that visibility भी मिल जाए. I think this is an interesting video that I should show everyone. तो जो भी नया gym हमारा open हो रहा है ना, just one last thing, so this will help people to understand that how the gyms look like. Am I visible? Hey, come on, what's happening? Can you all see this? Yes, we can. Okay, so look at this is the sector 1 to this is a 3D model of the gym that we have built. That's one I want to share, really quickly. To now everyone understand how the हर gym का 3D modeling होता है. The good thing that whenever we take a gym, there is a 3D model that gets designed. Absolutely. Wonderful, Shal. And I'll also request as we close, I'll look forward to a message that you want to give to everybody who's listening to you.
be a part of this journey, and I can tell you one thing, that you will be making the best investment over the next 5 years. I'll tell you why. Two things. We are going to be the largest brand that this world will see. And when I'm saying that, I mean it. Why? As a founder, when I said I've taken the biggest, so everyone asks me what is a hedge? I've hedged myself for this one. So when I've hedged myself, this is gonna, I want to make WTF the largest gym brand existing in this world. We have Anytime Fitness with 5,000 clubs. हम इंडिया में 5,000 क्लब खड़े कर देंगे अगले 5 साल में. That is the power we're going to build. And then again, from the investment perspective, I want everyone not to open one gym, but with one gym, I can tell you a couple of examples that we have partners who have opened more than one gym with us after opening one gym. So I want you to open first gym with us, and let's take the investment and try to be more and more, have more and more centers and make the best investment ROIs. So be a part of the journey and be a part of the most advanced tech-driven gym brand the country has seen, and be a proud owner for that as well. You market में कहेंगे ना कि मैं WTF gym का owner हूँ. I think that's the best feeling I want to give everyone. I want to make gympreneurs, and all of you gym entrepreneurs, you all have to become a gym entrepreneur. So please go and speak with the franchising day team, and I'm looking forward to open, let's say, 50 plus franchises from this meeting as well. Wonderful, Vishal. Thank you so much. And Thank you. We second what you say, and at Franchise India also we have a lot of confidence on what you have built. We have worked with many brands, have not seen many brands scale at the pace that you are doing in such a short span of time, and also profitable gyms, which remains a very big question mark, and the huge investment that entails and goes in the gym. Difficult sometimes for a franchisee to recover. So thank you so much for being with us. And friends, we have also shared our coordinates in the chat box. You can reach out to us on the hotline number, which is 9717683838, and also on the email ID, which we'll put in the chat box for you to maybe look at, and we'll start reaching out to you. Come visit, meet. We are happy to start interacting one-to-one. Thank you so much, Vishal, for being with us. And let's WTF. Bye. Absolutely. Okay. Bye. Wonderful. Cheers. Bye, everyone. Thank Bye. you. Ashika, over to you. And thank you, Team FI, for doing this. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sonia ma'am. Thank you, Vishal, for this great and energetic session as WTF looks like. So friends, for more details about the brand and to directly connect with Vishal for more details and to start WTF gym in your location, you can reach us on our hotline number 9717683838. You can also write us on feedback@franchiseindia.in. Tomorrow, Franchise India brings back again its edition Bharat Franchise Show. It's specially occasionated for Independence Day. So you can do registration link shared over the chat box. You can use this chat box link for the registration. And for more details about Bharat Franchise Show, you can reach us on our hotline number 9717683838. But tomorrow's timing is not 7 p.m., it's 4 p.m. So you can do your logins right now. Thank you everyone for joining today's webinar. Thank you.